Gak apa-apa, gak apa-apa. Yay! हेलो यूट्यूब, दिस इज़ शहाब हाशमी हेयर। आज मेरा लास्ट डे है यहाँ सेमिनियाक में। तो पिछले 3 दिन से मैं कुटा, कांगू और सेमिनियाक में घूम फिर रहा था, इस जगह को एक्सप्लोर कर रहा था। तो बहुत खूबसूरत जगह है, आप लोग ज़रूर आइए यहाँ पे। आज मैं जा रहा हूँ उबुद। बहुत ही नेचुरल और ब्यूटीफुल प्लेस है, काफ़ी खूबसूरत जगह है वहाँ पे, आप सबको दिखाऊंगा मैं। सुबह के 7 बजे और मौसम बहुत अच्छा है। कल का सारा दिन हमारा बारिश ने वेस्ट किया है, तकरीबन 8 से 10 घंटे लगातार बारिश हुई है। जो प्लान्स थे कल के वो सारे ख़राब हो गए। Guys, if you ever come to Bali and if you wanna see the real Bali and you wanna enjoy it and you wanna explore it, then this scooter or bike, this is the best option. You can rent a bike in just 50,000 Indonesian rupees for 24 hours, and the petrol is also very cheap here, so it's the most economical option. You can move easily everywhere, wherever you want to on this bike. It's really cool. I have reached Ubud and I have checked into my hostel. तो हॉस्टल काफ़ी मज़े का मिल गया, मैं आपको बताता हूँ। ये हमारे हॉस्टल के मैनेजर हैं। बस ये नहीं, कोमान ने ये हॉस्टल में चेक इन करने दिया मुझे 11 बजे से पहले। थैंक यू वेरी मच टू हिम। तो आपको पहले हॉस्टल दिखा दूँ मैं ज़रा। गाइस, ये हॉस्टल है और ये हॉस्टल का रहने वाला हूँ। और ये मेरा लॉकर रूम है जहाँ पे मैंने सारा लगेज रख दिया। ये वॉशरूम है, ये नहाने की जगह। हॉस्टल आप बिलीव नहीं करेंगे, मुझे सिर्फ पाकिस्तानी 360 रुपये पर नाइट में मिला और इसमें ब्रेकफास्ट भी इंक्लूडेड है। तो दुनिया भर में अक्सर साउथ ईस्ट एशिया में ऐसी लोकेशंस में आपको इस प्राइस में हॉस्टल मिल ही जाता है। तो इसको ढूंढने का तरीका बहुत आसान है। ऑल यू नीड टू डू इज़ टू डाउनलोड एन ऐप विच इज़ booking.com, or you can go to their website also. वहाँ जाएं। गुड मॉर्निंग। तो वहाँ जाके आप फ़िल्टर लगाएं प्रॉपर्टी टाइप में हॉस्टल्स, और डिफरेंट फ़िल्टर्स लगाएं, प्राइस वाइज चेक करें, डिस्टेंस वाइज चेक करें, रिव्यूज़ देखें उनके, जो प्लेस आपको बेस्ट सूटेबल लगे वो बुक कर लें। एक अपना क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड ऐड कर लें। अगर आपने क्रेडिट कार्ड ऐड किया तो उसमें से उसी वक्त डिडक्शन हो जाएगी, और अगर आपने डेबिट कार्ड ऐड किया और उस पर इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस की फैसिलिटी ऑन नहीं है तो डिडक्शन नहीं होगी। अच्छा, इसके अलावा जो ऑप्शंस हैं हमारे पास वो हैं hostelworld.com, Airbnb और hostels.com। इस तरह के डिफरेंट ऑप्शंस हैं, यूज़ कर सकते हैं। ये अभी मैं उबुद पहुंच गया हूँ और इट्स क्वाइट अर्ली इन द मॉर्निंग। हर कोई अपनी शॉप्स वगैरह ओपन कर रहा है। एंड राइट नाउ आई एम गोइंग टू द उबुद मार्केट to get some breakfast.
the road again on my bike, and this time I'm going to the rice fields of Ubud. हम जा रहे हैं राइस फील्ड्स की तरफ उबुद में, और रास्ते में ये लोकेशन मुझे बहुत प्यारी लगी, तो मैंने कहा आप लोगों को भी दिखा दूँ। What is the name of the? Oh yeah, so we are on Tegalalang Rice Terrace in Ubud. Tegalalang. 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 Alang. Yeah. So we are at the Tegalalang Rice Terrace. Welcome to Rice Terrace. Start line. यहाँ पे देखते हैं रास्ता कहाँ लेके जाता है। How to go there? How? From there? Yeah. Thank you. Kepikir? If you go there, then you have to walk all the way up again. Okay. So I'm just trying to go there. There you need to follow this. This stuff? I was there. Yes. Okay, thank you. You're welcome. राइस टेरेस वाली जगह पे आ गया हूँ भाई, और बड़ी खूबसूरत और पुरसुकून जगह। सामने लोग झूले ले रहे हैं। आज पता लग रहा है कि मेरी कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ की पोजीशन क्या है इस वक्त, कितनी अच्छी कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ है मेरी। आई थिंक आई नीड टू इम्प्रूव इट, आई नीड टू वर्क ऑन इट। ये जो रास्ते हैं इस राइस फील्ड के, ये उतरते चढ़ते मेरे सांस चढ़ गया जी। ये तो हाल है जवानी का।